Hello, good morning to my lovely kids. I hope you all are fit and fine and at home. So, welcome back to our class of GK class 2. So, today we will learn about our internal organs. You know what are internal organs? Internal organs that we can't see but very important for our body. So, first organ is brain. Brain is the master organ of our body. Without brain, we can't think, we can't do anything. So, brain is the master organ of our body. The brain is the master organ of our body. Important organ of our body. If you come little down, heart, left side. Always remember where is the heart? Left side of our body. And what is the work of the heart? Heart pumps the blood and reach in our whole body. Pumps our blood. Without pumping blood, pump कहाँ जाएगा फिर blood? Without pumping, pump तो करना पड़ेगा ना. So who will pump? Heart will pump the blood. The heart pumps blood to all parts of our body. Actually this is revision. So हम ये पहले ही learn कर चुके हैं, but today we are taking just a revision. Next is lungs. Lungs. We have two lungs, left side and right side. So we have two lungs, and what is the work of the lungs? Lungs help us to breathe. Lungs help us to breathe properly. The lungs help us to breathe. These are the lungs. I said to ना कि two lungs होते हैं. So there's a pair of lungs which is help us to breathe. Kidney. Yes, we have two kidneys. Right kidney, left kidney. And what is the work of our kidney? Kidney purify the blood. ब्लड हमारी बॉडी में जो होता है उसको प्यूरिफाई करता है. आप पानी पीते हैं, पानी आप ऐसे तो नहीं पी लेते हैं. पहले क्या होता है, वो पंप जो हमारा वाटर होता है वो प्यूरिफाई होता है, फिर हम उसे पीते हैं. राइट. तो ऐसे ही जो ब्लड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी विल प्यूरिफाई द ब्लड एंड देन वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है. सो द किडनीज फिल्टर एंड क्लीन द इम्प्योर ब्लड. तो प्यूरिफाई करता है, जो किडनी होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है. ओके. एंड वी आर ईटिंग whole day. So where the food will go? Where? Right. Food will go to our stomach. To our stomach. And what will stomach will do? What will stomach will do with our food? The stomach will digest the food. Okay. The stomach digests the food we eat and convert into एनर्जी. है ना, तभी तो हम वर्क करते हैं. कहते हैं ना हमें आज बड़ा फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम खाना नहीं खाते हैं प्रॉपरली. तो स्टमक में कुछ नहीं जाता है, तो कोई डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टमक? टू डाइजेस्ट द फूड. How I'm moving my body? Because of bones, not because of skin, because of bones. And yes, है ना. So I'm joining a bone creates a what? Creates a structure, and that structures called skeleton. You know what is skeleton? जिसको हमने देखा है मूवीज में, पता है ना skeleton क्या होता है? Only a structure of bone, that's called skeleton. See, this is the skeleton. So what is the work of the skeleton? The skeleton gives us shape and support to our body. Okay. Wow, what a lovely flower. Can you see the beauty of this flower? How can we see the beauty of our nature, beauty of our world? Because of our
eyes. Yes, I'm talking about our five sense organ. First is eyes. Okay, so first is eyes. Because of eyes we can see and react on everything. Because हमें अगर कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम react कैसे करेंगे? Right? हम कहते हैं ना, wow, what a lovely park. Wow, what a lovely flower. How will react? Because of eye. हम देखने के बाद react करते हैं. See, है ना? See. What is the work of our eye? To see. Can you hear this sound? Chum chum, clap clap, clap your hand. Because of ear, we can hear all the sound because of ears. Okay, we are here with our ears. We have 2 ears or one, 2, and we have 2 eyes, 1, 2. Next is our choti nose, right? Nose. Because of nose, we can smell all the things. अभी हमें अच्छी भी लगती हैं, हमें गंदी भी लगती हैं. तो that because of our nose. And tongue. जब हम कुछ खाते हैं, मम्मा कहते हैं ना कि मम्मा wow what a lovely delicious food. और कभी कहते हैं मम्मा अच्छा नहीं लगा खाना. तो कैसे पता चलता हमें? Because of our tongue. Because of our tongue. And you know what? जब हमें भूख लगती है तो कौन कहता है हमें खाना खाने के लिए? टंग हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि बहुत देर हो गई कुछ नहीं खाया है. वी वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग. सॉरी, आई वॉन्ट टू से टेस्ट समथिंग. सो बिकॉज ऑफ टंग हम टेस्ट करते हैं. एंड द लास्ट, राइट, स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. बिकॉज हमारे हेड से लेकर हमारे टो तक सब जगह ओनली स्किन है ना. हमारा स्केलेटन है वो शेप तो दे देता है, बट क्या अच्छा लगेगा स्केलेटन अलग अलग खाली खाली? नो, अच्छा नहीं लगेगा. सो ब्यूटी, टू गिव द ब्यूटी हमें क्या मिला हुआ है? स्किन. स्किन से हमारा जो स्केलेटन है वो सेफ रहता है. और कभी जब हमें कुछ ठंडा लगता है तो हम कहते हैं ना बहुत ठंडा है, ओ माय गॉड सो हॉट, बिकॉज ऑफ स्किन. सो वी हैव 5 ऑर्गन्स. ठीक है, let's make a list. List of okay, can you tell me how many organs we have? How many sense organs we have? 1, 2, 3, 4, 5. Eyes, ears, nose, tongue, skin. And you know what is your homework? Your homework is you have to write the work of eye. Like we can see with the eyes, we can hear with the ears, we can smell with the nose, we can taste with the lungs, and we can feel with the skin. So again I'm repeating, you have to write the work of our eyes. We can see with our eyes, we can hear with the ears, we can smell with the nose, we can taste with the tongue, and we can feel with the skin. You have to write in the notebook. This is your homework. Okay. So I hope the internal organ and sense organ topic is clear to you, and you have to revise it at home. So stay at home, stay healthy, stay fit, and do something productive. आपको जो भी मैम वर्क दे रहे हैं, you have to revise at home. Okay, bye, take care.